को और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ट्रस्ट करके उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं। तो ये दोनों के कारण ये महत्वपूर्ण बिल है, इस पर चर्चा होगी, सबके सुझावों का स्वागत है। उसके का नाम क्या है? Mr. Shashi Tharoor. Thank you, Madam Chair, and I'd like to thank the Minister for his eloquent introduction of this bill. On the face of it, as he said, the Indian Institutes of Information, Management Bill is a fairly routine one, and he has presented it in a very unexceptionable light. But I do have some concerns, Madam Chair, that I would like to share with him. First of all, because the legislation brings to the fore certain larger issues involved in our government's approach to the higher education sector. But secondly, of course, there are specifics on the bill that I would also like to address. The larger point is that we have in our country a potential demographic dividend because of our youthful population. But it's very clear that if we don't revitalize our education sector, and in particular higher education, this demographic dividend potentially will transform into a demographic disaster. If we cannot train, educate, equip our young people to take advantage of the opportunities that the world economy and the national economy will offer them in the 21st century, then we will actually end up with a lot of frustrated, unemployed or underemployed young people. And we have seen the consequences of that in our tribal areas with the Maoist movements, the Naxalite movements, and we don't want to see that kind of negative consequence amongst our youth at large in our country. I do fear that this seems not to have been given the importance that it deserves by our government, and I'm not blaming my friend the HRD minister. The problem lies at heart in this government's inability or unwillingness to provide the necessary resources required to be able to drive our higher education sector towards a demographic dividend. If we were to look, for example, at the specific case of the IIMs, they were created, and they were created many years ago, very much as an earnest of the state's determination to equip, train our bright young people, to contribute towards their future by equipping them with management qualifications, which were earlier unknown in our country. Management education has been around for 100 years or more in countries like America. In our country, really, they started with the IIMs. And what is striking is that instead of investing in our future through strengthening our education, higher education, what have we seen in the share of budgetary outlay towards education? In the most recent budget, it was stagnant at only 3.7%, and only a meager 1.5% has been allocated to higher education altogether, even though the need has risen year after year, the population is growing year after year, and inflation is also reducing the value of the amounts year after year. The Standing Committee report in March this year, which discussed the demands for grants of the Department of Higher Education, made very strong and pertinent observations and noted that though the government claims to have increased the expenditure for IIMs and IITs, these institutions have been dealing with a chronic shortage of resources and funds that deters them from competing with the global institutions against which we must benchmark institutions like the IIM. Only 3 of our IIMs feature in the list of top 100 management schools in the world as per the 2017 Financial Times ranking. Now, considering the quality of the students that we get in the IIMs, we have very rigorous selection procedures in place in our country, strong competitive examinations. I must say we are failing our young minds if we cannot offer them the access to the best universities in the world in our country. There are young men and women who have to go out and compete with the world. We are in a globalizing economy. Indian companies must also hold their own with multinational corporations and against the best that the world has to offer. Why can't we offer them the best or even better educational facilities than is available in some of these Western countries? I believe that having only 3 out of 100 is a travesty, and I think it reveals that the government is not doing enough
to bolster their development. Now, the government is proud to announce that it's created another institution of national importance. I welcome and applaud that, but the expenditure of the government towards higher education is in real terms it's coming down, in nominal terms it's increasing very, very modestly. I think 2% in the last couple of years. Now, when you have an institution of national importance, Madam Chair, it must also be an institution of budgetary importance. But where is the budgetary importance that has been given? I think that my good friend, the HRD Minister, is not getting the support he deserves from the Finance Ministry. And it seems to me that for the government to make, understandably, very ambitious claims about its efforts has to be matched with suitable budgetary allocations. I can see my friend, the Minister for Women and Child Development, has the same problem. This emphasis on fiscal rectitude is all very well, but not at the cost of the nation's objectives and priorities. In fact, if I can just return to the HRD Ministry, having worked there myself for a brief period, if we see how the government's budgetary priorities are functioning with the Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, I know it's not connected to the IIMs directly, but it reflects a larger problem, that in the name of fiscal probity and controls, you are starving the one thing you have created, we have all created, to promote the excellence, the equity and the access to institutions of higher education at the states. And we had hoped to upgrade those poor universities through this Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, the RUSA, but by March of this year, Madam Chair, only 46% of the total central share of RUSA expenditure has been released, and only 24% has been utilized. My worry is this shows either a lack of intent or a lack of monitoring of implementation, or both. And I want to draw the Minister's attention to this. We have a similar problem when it comes to teachers in higher education. The government launched the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Training, which is supposed to strengthen the creation and training of teachers in our educational institutions. But what do we see? No progress in the establishment of centers in the universities, and a tiny fraction of the fund has been utilized since 2014. In fact, coming back to the IIMs, let's look at the vacancies. Just recently, this very month, the Minister of State in HRD responded to an honourable MP's question about vacancies in teaching positions, and he stated that 26% of faculty posts in the IIMs and 35% of faculty in the IITs are lying vacant. Now, the race to create more institutions in numbers, which is definitely necessitated by our population growth, must not overshadow the aspects of quality of education. We cannot make up in mindless numbers the glaring lack of quality in higher education in India, but for quality we need resources, we need money, we need facilities, we need faculty. And this is where, I'm sorry to say, the government is collectively lacking. The government has also delayed the implementation of the Higher Education Financing Agency. How many years have we been hearing about this, Honourable Minister, and we have actually not seen the establishment of this agency? If we really want to have an effective higher education sector for our youth, the government has to be more innovative in its approach. We can have slogans, but those slogans must be fulfilled in reality, and that's not happening. Multi-pronged malaises have really held the universities of India back from realizing the aspirations of our young people, and I think only a vision that goes beyond superficial change, that goes beyond slogans to real tangible action will work. But let me come to the specifics of the bill, and I want to agree entirely with the Minister that brand IIM has truly come into its own and is synonymous with a world-class management education with a distinctively Indian flavor. Even though only 3 of those IIMs have made it to the top 100, those 3 are, I think, a revelation of what the rest could be like. After all, the story of our country's economic resurgence would be incomplete without acknowledging the critical role collectively played by the IIMs in providing our country with an amazingly talented, motivated, and highly successful pool of managers
who have gone on in many ways to transform every area of our society and our economy with their exceptional leadership. So, because they've done that, and because we all have come across very distinguished IIM alumni and the difference they've made to India, I also want to affirm that, in my view, they've realized the hopes and vision of the man who established the IIMs, Pandit Jawaharlal Nehru, who had the vision to realize that India needed management education and brought it into this country. As in many other areas of our nation building, we must pay homage to his far-sightedness in realizing that if India is to meet its tryst destiny, India would need world-class leaders for business and industry as well. Now let me turn to the specifics of the bill, because while applauding many good things about it, I do want to acknowledge it's clearly an improvement on the earlier draft that was circulated by the minister's predecessor. That had been assailed by various legitimate controversies, and I congratulate the government on having been able to move past those issues and to come up with a very far-reaching bill. And I want to really congratulate Javadekar Sahab, because there's a significant degree of autonomy conceded for the first time. I think really it's a remarkable moment when a government minister in our system actually surrenders powers and says, please have more autonomy. Many of us have been clamoring for this for some time, and I want to congratulate the Honourable Minister that he has taken this step. But though I support this thrust, I must say that I have some concerns. Now, he has already summarized the bill, Madam Chair. Institution of national importance. One thing that is very striking is the post of visitor is abolished, so that the visitor of these IIMs was the Rashtrapati. Now, it's perhaps a slightly surprising welcome to our new Rashtrapati that he's being stripped of a function as soon as he takes over, but Javadekar Sahab will be answerable for that. It may be an odd welcome, but nonetheless, the result of this is that the Board of Governors has a lot more authority. They'll select the chairperson, they will select the director, and neither the Rashtrapati ji nor the Human Resources Development Minister will now have a role in the selection of the top executives of these IIMs. And I think relinquishing government control is an example that I'm very glad he has set through the IIMs. I hope he will follow it in other institutions and create more autonomy for good higher universities and institutions of other learning. And may I request him in the cabinet to encourage his colleagues in other ministries to start doing the same thing. We really need to see some of this being moved aside. And one particular feature I want to congratulate the minister for is he has insisted that the board shall comprise 3 women members, absolutely necessary, and 5 alumni, which is a very good thing. So those who are proud of being educated in these institutions will have an influence in how successive generations are also educated. Excellent idea. And an annual report in the IIMs will be tabled in our parliament. The CAG will audit their accounts. All of this is good, because then we too can ask questions and do some oversight when we see the report. The Coordination Forum is an interesting initiative. We had contemplated this in our time. I must say you have taken a bold step that you are not the chair, Mr. Minister, but you have left it to the eminent person, I gather, an eminent person chosen by the board to chair the coordinating committee. And all of these features I want to welcome in the bill. Where do I have some problems? First issue is the bill is completely silent on the issue of, I have just 5 issues, madam. The bill is completely silent on the reservations issue, in teaching staff in particularly. Now, I've already mentioned the 26% vacancy in teaching staff and faculties. Now, on top of that, you don't say anything about reservations for people in the faculty positions. I know that my good friend, the Honourable Minister, has stated that the law of the land will always apply, but I don't find a satisfactory mention of this in the bill. Beg your pardon? Earlier, there was a specific provision. Today, there no longer is. And what is interesting is there is a very vague language saying the IIM shall try to recruit teachers from the weaker sections of society. But I don't understand why, as in the previous provision, it could not be explicitly stated as a requirement in the bill. Now, what is particularly worrying, Minister Sahab, is that of the 233 faculty members in the 6 IIMs that we have information for, only 2 belong to the scheduled caste community and none from the scheduled tribe community. Now, we are living in an era where more and more of our scheduled caste brothers and sisters are speaking of entrepreneurship as the way out of their lot in life.
Dalit entrepreneurship is a major theme in recent years, and I think it is a worrying neglect of the legitimate aspirations for business leadership and business development on the part of our scheduled caste and scheduled tribe communities that we have only 2 amongst all of them out of 233 faculty. I would urge the Minister to give this attention. Second issue that the House must contemplate is a consequence of a good decision. The decision to give all 20 IIMs in the country the right to award degrees is welcome, and I support it. Madam, I need 3 minutes because just 3 more points. Prior to this, IIMs, like other universities, used to offer something called a postgraduate diploma in management, which obviously was not universally accepted as an MBA, particularly in many foreign countries. If IIMs give MBA degrees, which now they're going to be allowed to, that will be very good. But it will now create a difference between the IIMs and all the other private and semi-private institutions of management, which are still stuck with giving PG DMs. And Minister Sabha has got to be aware that creating a new differential is not going to help the challenge of educating the large number of young people in our country who need management degrees. And it will be an unnecessary disadvantage placed upon these other institutions. And therefore, I propose that the government in its next step should have a more ambitious management education bill so that other management institutions can benefit from these reforms, create a national management university to which they could all be affiliated and which can issue MBAs as well. So it's not only the IIMs giving MBAs as a result of today's bill, but other management institutions can also do so. Singapore did something very similar with the Singapore Management University. It has been a huge success, improved management education in the country, but it's also gone very far in terms of global recognition. Third issue, ma'am. The complete control over the board that has been granted by this bill over the fee structure worries me a little bit. I completely advocate autonomy of the university in other matters, IIMs and so on, but a lack of control of the government over the quantum of fees may lead to disadvantages for the marginalized sections in our society. The needs of the nation could not be properly met if students from poorer families would have to undertake the burden of very heavy loans just to be able to study in a government institution, which is what the IIM is. They would then feel obliged to look for lucrative jobs in the business sector. They would not necessarily try and work back to their communities. The chances of such an IIM graduate burdened with loans pursuing academics or research or even teaching in future IIMs would not be there. And therefore, I think it would defeat the purpose of the bill if there wasn't some way in which we could guide some control. Madam, last 2 points, madam. Fourth concern is lack of full-time directors in the IIMs. November 2016, the minister has told us that 13 of the 20 IIMs are functioning without full-time directors. The government has failed to fill up these vacancies consistently, and this is creating a vacuum of leadership in the IIMs. And then there are 2 small provisions which I want to mention. One is you're changing the name of IIM Calcutta to IIM Kolkata in this bill. I'm a little worried about the erosion of the brand value of IIMC as a term. But equally, I come from Kerala, and we already have an IIMK in IIM Kozhikode. How can you have 2 IIMKs? You will actually undermine the identity of both. I think this requires a rethink, and you might want to leave IIM Calcutta as Calcutta, or call it IIM Kolkata, but let it be known as IIMC, because that is a very distinctive brand. And finally, a rather petty thing has been done, Madam Chairman, in this bill. With great regret, I want to mention that the government has decided to drop the prefix Rajiv Gandhi from the name of IIM Shillong. Now, this is symptomatic of a pattern of attempting to demolish traditions and erase history. Of course, Rajiv Gandhi's contribution to this country is something that does not need one name here or there to justify it. He has done a great deal to take India into the 20th century. But I must say it is rather petty of the government to stoop so low in such a manner. To conclude, madam, management education is extremely important in our country. These institutions have actually done a great deal for India. They have driven our nation forward. Many of the IIM products must hold key positions in our economy, in our society. And therefore, I hope that the government will actually see this bill as an opportunity to bolster the potential of these institutes, address these flaws, and give India the management leaders it deserves. Thank you, Madam. Jai Hind. धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया।
as our honourable member had just paid homage to Nehru and Gandhi family, I would like to pay my homage to कल ही हमारी आदरणीय अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि थी. उनको मैं याद करके ये कहना चाहती हूँ कि ही स्पोक अबाउट इंडियाज़ फ्यूचर फॉर 2020 कि युवा कैसे आगे बढ़े, हाउ टू इग्नाइट माइंड्स. तो आई एक्चुअली वांट टू पे होमेज टू ऑनरेबल APJ अब्दुल कलाम when this bill is there, where he is giving his ideas to take the young Indian minds to take India's future forward. And second person I would like to pay homage is to Professor Yashpal ji. As Honourable Minister knows that Professor Yashpal was the head of the committee. He headed the committee in 2008 to advise on renovation and rejuvenation in higher education, which was tabled in 2009. और उस पर भी IIM के विषयों पे आदरणीय प्रोफेसर यशपाल जी ने भी बहुत अच्छे रूप से बहुत सारे अच्छे मुद्दे दिए थे और हायर एजुकेशन पे दिए थे. उनका कुछ दिनों पहले देहांत हुआ. सो आई वुड लाइक टू रिमेंबर हिम ऑल्सो विद दिस बिल. मैडम स्पीकर, सभापति महोदया जी, जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, हम भारतवर्ष के विचारों पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम ये जानते हैं कि भारत डिस्कवरी और इनोवेशन पे हर वक्त अपनी संस्कृति के रूप से आगे बढ़ता जा रहा है. वो डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो हो, इंडियाज़ डोमिनेंस इन वर्ल्ड ट्रेड टिल 17th सेंचुरी हो, एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, रमन इफेक्ट हो या अभी मंगलयान हो, भारत में हर वक्त डिस्कवरी और इनोवेशन की रूप और प्रथा और प्रचलित होना हर वक्त हमारे यहाँ चलता रहता है. IIM के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र भारत के बाद एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप से सरकार आगे देख रही थी. लेकिन उसके बाद IIM का विषय इसलिए निकला क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपको इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है और समय भी बदलता गया, उस रूप से बहुत बड़े जॉब डिस्क्रिप्शन भी बदलते गए. और IIM का निर्माण 1960 और 1970 के दशक में हुआ. 1961 में अहमदाबाद और कोलकाता IIM का निर्माण हुआ और 73 में बंगलोर IIM का निर्माण हुआ, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप से IIM को आगे लेके जाए. IIM के रूप से हम आगे इसलिए बढ़ना चाहते हैं कि मुझे कहानी याद है जब मैं पेपरों में पढ़ती थी कि हम हर वक्त अपने एक विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं. इस भारत का युवा कुछ न कुछ करना चाहता है. 2003 में मुझे याद है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अभी के, तभी वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने 2003 में अपनी पूरी मंत्रिमंडल और अपने ब्यूरोक्रेट्स को लेके वो IIM अहमदाबाद गए. वहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं था, बट टू कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ एंड टॉक टू द प्रोफेसर्स एंड टीचिंग फैकल्टी टू अंडरस्टैंड हाउ ही कैन मेक हिज एडमिनिस्ट्रेशन मोर प्रोफेशनल एंड टेक हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉरवर्ड एंड कनेक्ट विद पीपल ऑफ गुजरात. मुझे लगता है ये विचार IIM के साथ हमारे प्रधानमंत्री तभी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस रूप से उन्होंने आगे लेके जाने की कोशिश की. आप सोचिए 30 साल पहले कभी विचार हमारा था कि नए नए जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे निकलेंगे कि मोबाइल के बटन पे हम कुछ दबाए तो एक टैक्सी आपके घर पे आ जाएगी और आप उस टैक्सी में बैठ के कहीं पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं. There are so many job description changing. We never thought about it 30 years ago. Well-being coach, offshore wind farm engineer, chief listening officer, app developer, genetic counselor, blogger, web analyst, ऐसे कितने अलग अलग रूप से जॉब डिस्क्रिप्शन बढ़ते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं. उसके लिए स्किल और इनोवेशन की ज़रूरत है और ऐसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि IIM ने उस रूप से बहुत अच्छा काम किया है कि एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन्होंने उस रूप से उसको आगे बढ़ाया है. मैडम, हम अभी जिस प्रकार से जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं जो 30 साल पहले देखते नहीं थे और आने वाले 30 सालों में और कुछ बदल जा सकता है, उस रूप से वी लुक एट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0. आज हम अलग रूप से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन देख रहे हैं. उसमें हमें टैलेंट पूल की ज़रूरत है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, 3D प्रिंटिंग हो, हर रूप से ये रेवोल्यूशन 4.0 के रूप बढ़ता जा रहा है. और भारत की, एज मिस्टर थरूर सेड, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप से और यूथ ऑफ दिस कंट्री वांट टू स्ट्राइव विद दैट, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत उनकी ज़रूरत है. IIM का वैसे भी एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनता जा रहा था 1960 के दशक से. उनकी खुद की फैकल्टी थी, अलग अलग रूप से इंक्यूबेशन सेंटर बनता गया, फिनटेक बनाते गए और IIM ने भी अपना ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एक बड़े पैमाने पे बनाया, जिससे फॉरेन फैकल्टी भी IIM से जुड़ती गई. जितना मुझे याद है कि 1963 में जब IIM 61 में अहमदाबाद और कोलकाता IIM बना था, तभी हार्वर्ड और MIT के साथ एक पेट्रन के रूप से हार्वर्ड और MIT ने IIM को मदद की थी सेटअप करने के लिए. आज स्थिति बदल गई है.
मैडम स्पीकर, मैं सिर्फ 4 मुद्दों पे इस बिल पे कहना चाहती हूँ कि ये 4 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अपलॉडेबल है, बहुत अच्छे रूप से विचार किए गए हैं कि हमारा भारत का युवा किस रूप से भारत के इस आने वाली सदी में, जहाँ पे भारत आगे बढ़ रहा है, वो किस रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहता है। जब IIM का विचार किया गया, IIM तो बने थे, बहुत अच्छे रूप से आगे बढ़ रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू डू समथिंग। ऑटोनॉमी देना ये IIM के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका मुझे लगता है इस संसदीय कोई भी दल के हमारे नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी हो, वो यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। और मैं आदरणीय मिनिस्टर श्री जावड़ेकर जी को और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि बच्चों को उनका विश्वास उन पे रखना, बच्चों के विश्वासों को आगे बढ़ाना, ये हर किसी पालक का, पेरेंट का एक अपने जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है एज अ पेरेंट जावड़ेकर जी ने वो जिम्मेदारी ली कि इस इंस्टीट्यूशन में जब तक मैं विश्वास नहीं रखूंगा कि वो कुछ कर सकते हैं, मैं उनको वो ट्रस्ट नहीं दे पाऊंगा। ट्रस्ट डेफिसिट इतना होता है कि हमें पता नहीं होता हमारे बच्चे क्या करते हैं। बट ही वांटेड टू बिलीव दैट माय चाइल्ड विल थ्राइव, ही विल डू वेल, ही वांटेड टू बी पॉजिटिव। उस रूप से उन्होंने बिल में पूरी ऑटोनॉमी दी हुई है। आप सोचिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। IIM ने भी अपनी ब्रिक बाय ब्रिक इंस्टीट्यूशन बढ़ाते गए। IIM के एलुमनाई नेटवर्क आप देखेंगे तो इतना बड़ा है, जो कि भारत के बहुत क्षेत्रों में भी, सिर्फ कॉर्पोरेट क्षेत्रों में नहीं तो हमारे सरकारी क्षेत्रों में भी IIM के स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर्स हैं वो काम करते आ रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि फिर से एक बार हर कोई युवा क्या चाहता है कि मेरी जो सोच है उसे आप बंदी मत बनाओ, मुझे ताकत दो, और वो ताकत इस ऑटोनॉमी से, ये स्वायत्तता से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री महोदय ने दी है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं दूसरी विषय पे और एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे लगता है विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि इन द पैसेज ऑफ दिस बिल आप लोगों ने कहा जैसे 3 महिलाएं इस पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे होंगी, BOG पे, और 5 मेंबर ये एलुमनाई नेटवर्क से लिए जाएंगे। जब हम हमारे स्कूल में थे, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ स्कूल में अच्छा होने के लिए हम कहते थे कि कल जाके हम स्कूल से बाहर जाएंगे तो आने वाले स्टूडेंट्स, कल बेंच टूटी हुई है, बाथरूम ठीक नहीं, तो हम कुछ आगे जाके कहें और एक एलुमनाई नेटवर्क बनता है। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन IIM का वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है मैडम। हम जब देखते हैं IIM के एलुमनाई नेटवर्क पे तो हम दोनों रूप से देखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हार्वर्ड और MIT ने सपोर्ट किया था कोलकाता और अहमदाबाद IIM को आगे बढ़ने के लिए, एक पेट्रन के रूप से मदद की थी, एक लर्निंग कोलैबोरेशन किया था। लेकिन जब आप हार्वर्ड और येल या स्टैनफोर्ड इन सबको, MIT को देखते हैं तो इनका एंडाउनमेंट अभी $35 बिलियन की है। एलुमनाई नेटवर्क मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये आजू बाजू से जमाती है और वो देना चाहती है कि हमारा ये क्षेत्र, हमारी ये इंस्टीट्यूट, हमारा ये विश्वविद्यालय किस रूप से और आगे बढ़े। तो इस रूप से ताकत हार्वर्ड, येल ऐसे बड़े बड़े नेटवर्क में उन लोगों को मिली है। IIM ने तो अभी शुरुआत की है, सरकार 7 साल पहले उसमें पैसे देती है और उस रूप से विद्यार्थियों को उसको सपोर्ट मिलता है इंस्टीट्यूशन में। लेकिन आप सोचिए कि आज एलुमनाई नेटवर्क के रूप से जब 2014 ने IIM ने एक डेवलपमेंट ऑफिस शुरू किया था, तो IIM रेज्ड इन जस्ट 3 years 200 crore rupees to support its IIM facilities। आप सोचिए, हमारे यहाँ भी वो ताकत कम नहीं है, ऐसे नहीं है। बस हम चाहते हैं कि लोग कल जाके कोई सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी इंस्टीट्यूट को, तो स्वायत्तता की भी बहुत ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट हो तो मैं इसमें क्यों पढ़ूँ, मैं इसमें पढ़ूंगा तो मैं इस एलुमनाई नेटवर्क से मैं क्या करूँगा। तो हर किसी की अपेक्षा होती है कि कल जाके मेरे इंस्टीट्यूट को, मेरे कॉलेज को, मेरे विश्वविद्यालय को एक स्वायत्तता मिले, एक स्वतंत्रता मिले, तो मैं भी अपने रूप से कुछ न कुछ करने के लिए अपनी ताकत दिखा सकता हूँ। मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा था कि IIM अहमदाबाद में एक एलुमनाई विश्ववीर आहूजा ने 7.5 करोड़ रुपए अपनी इंस्टीट्यूट को दिए थे। और ऐसे बहुत लोगों ने, अनोनिमस लोगों ने डोनेशन देके एलुमनाई नेटवर्क के रूप से इसको आगे बढ़ाया। जब हार्वर्ड कि हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में टॉप 100 में हमारे सिर्फ 3 IIMs है, वो आगे बचे हुए 17 IIMs भी जाए, तो क्यों ना हम इन एलुमनाई को वो सपोर्ट दें। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी सरकार को कि 5 एलुमनाई, पहले सिर्फ 3 आते थे उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में, अभी 5 है और 3 महिलाएं इसमें शामिल कर रहे हैं, तो इसकी बहुत सराहना करनी चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री महोदय को। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अभी यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि बहुत जगहों पे जगहें खाली है, लेकिन जब स्वायत्तता मिलती है तो काम करने की ताकत भी बहुत बढ़ती है और विचार करने की भी शक्ति ज़्यादा मिलती है।
जब स्वायत्तता आती है तो ये हमें नहीं सोचना पड़ता किसकी सरकार आई है और किसकी सरकार गई है और किस सरकार का सुनना और किस सरकार का नहीं सुनना है. इट इज ऑल अबाउट डिलीवरी, कॉम्पिटेंस एंड व्हाट आई कैन डू फॉर माई इंस्टीट्यूशन. आज उस रूप से स्वायत्तता मिलने के बाद मुझे लगता है जब डायरेक्टर और बोर्ड गवर्नर्स खुद उनको ऑटोनॉमी ग्रांटेड हो जाएगी कि वो तय करेंगे कि IIM और कितना सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने. चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि अकाउंटेबिलिटी CAG से तो होती है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं मंत्री महोदय को. लेकिन IIM में सरकार की कितनी रुकावट कम हो ये इसमें पता चलता है. पहले ये रेकमेंड किया था, पिछले बिलों के बारे में भी आदरणीय थरूर जी ने बात की, तभी 5 सरकार के लोग BOG में आने चाहिए इस रूप से डिस्कशन होता था. लेकिन ये ऐसा बिल आदरणीय जावड़ेकर जी ने बनाया, उसमें सिर्फ 2 सरकारी मंत्रालय से लोग आएंगे, एक राष्ट्रीय रूप से और एक स्टेट से, क्योंकि स्टेट उन स्टेटों में IIM बनी जाती है. तो ये 2 ही लोग BOG के रूप से अपने रूप से IIM में काम करेंगे. सभापति महोदया, जब हम चाहते हैं कि एक विचार के रूप से कि कल आने वाला हमारा समय, जब आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 में हम देश की जब स्वतंत्रता का एक 75वां साल का एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाएंगे, उस महोत्सव में हम आगे क्या देखना चाहते हैं. हम जानते हैं कि 45% इस देश की जनसंख्या 0 से 24 साल की उम्र तक है. हम जानते हैं कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने, जो अभी थरूर जी ने कहा. लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने, इसीलिए स्वायत्तता बहुत जरूरी है. हम सब युवा हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारे हाथ में सिर्फ ताकत दे, ये ना कहा जाए तुम्हें सिर्फ डिग्री थमा दी और तुम उस रूप से काम करो. आज देश बदल रहा है और हर रूप से, कल भी एक बिल पे हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि आने वाले 2020 तक भारत तीसरी बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी बनने वाला है. ऐसी जनसंख्या जब भारत के साथ है तो उसके साथ उसकी स्वायत्तता भी बहुत जरूरी है. और यही IIM के इस बिल में दिखाई देता है कि स्वायत्तता पूरे रूप से हमारे साथ, युवाओं के साथ है. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, IIM में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में 74 ऐसे इंस्टीट्यूट पहले से ही हैं और अभी उसके साथ IIM की 20 इंस्टीट्यूट जुड़ रही हैं. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे थरूर जी ने कहा, उसमें मैं थोड़ा उनसे भी मानती हूँ कि 74 इंस्टीट्यूट्स जो अभी है नेशनल ऑफ इंपॉर्टेंस में, उससे ज्यादा स्वायत्तता IIM को मिली हुई है. IIM's got more freedom than those 74. I would like to request, if I can request the honorable minister, कि हम सबको क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे लाए और उस रूप से स्वायत्तता दूसरे लोगों को भी मिले. तो हम जब चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस देश को आगे बढ़ा रही है, तो इन 74 के साथ 20 एक साथ मिलने के बाद सबको उस रूप से ताकत मिले और उसको आगे लेके बढ़ते जाए. मैं इतना ही कहूँगी मैडम स्पीकर, एक पार्टी के यूथ विंग की अध्यक्षा हूँ, युवाओं से सब जगह मिलती हूँ. युवा यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे हौसलों की उड़ान के साथ मेरे पंख न काटे जाएं. मुझे लगता है उस पंखों को ताकत देने के लिए IIM जैसा बिल, अभी कहा गया कि वो एलीट इंस्टीट्यूट हो रही है, क्या इस पे ये हो रहा है, फला हो रहा है. लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे IIM में हम ये खबरें पढ़ते हैं कि IIM में जो काम करता है वहाँ पे जॉब, जब ऑन कैंपस जॉब्स जब होते हैं, किसी को 1 करोड़ की जॉब मिल जाती, किसी की 2 करोड़ की. लेकिन ऐसे भी IIM के बहुत सारे उदाहरण हैं जो वहाँ से पढ़ के बड़ी बड़ी NGO में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे IIM के उदाहरण थे. उदाहरण, कोई सरकार में काम कर रहा है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर IIM से है, रघुराम राजन जी IIM से थे. हर कोई IIM से अपने रूप से इस देश के आगे बढ़ने के लिए, देश के सपने के साथ आगे बढ़ना चाहता है. तो युवा यही चाहता है कि मेरे हौसलों की, मेरे विचारों की, मेरे तरक्की की उड़ान को आप पंख न काटें. और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी को, उन्होंने उन उड़ानों को हौसला दिया है. आज IIM के रूप से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई फील द यूथ्स एस्पिरेशन इज द कंट्रीज होप. इफ वी स्टॉप एस्पायरिंग, कंट्री हैज नो होप. और देश की इस आशा के साथ हमारे युवाओं की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है. दे अस्पायर, देन ओनली वी कैन होप फॉर दिस कंट्री. एंड IIM के रूप से आज एस्पायर करना, उनको इंस्पायर करना और देश को इंस्पायर करने के लिए हम आगे हैं. इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 2022 के बाद जिस न्यू इंडिया का सपना लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, कि हर एक युवा का सपना इस भारत का सपना हो, इस भारत को आगे ले जाने का सपना हो. उस भारत के सपने के साथ ये पहली मुहिम है, ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी. किसी ने कहा ये तो एक्चुअली फ्रीडम मूवमेंट फॉर IIM हो गया है. मुझे लगता है एक फ्रीडम मूवमेंट IIM बना के IIM ने उधर की फैकल्टी, हर किसी को वो ताकत मिली है. और IIM एक शुरुआत है.
मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के रूप से एक शुरुआत है। मैं खुद IIM से बहुत रूप से जुड़ी हुई हूँ। हमें महाराष्ट्र में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप से उन्होंने मदद की है। बहुत जगहों पे फिनटेक हो या इंक्यूबेशन सेंटर हो, IIM ज़रूर बनाता रहता है। हम महाराष्ट्र में भी IFSC बना रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। उसके साथ IIM अहमदाबाद ने कहा है कि हम खुद फिनटेक बनाएंगे और युवाओं को पढ़ाएंगे कि किस रूप से जॉब डिस्क्रिप्शन नया बन रहा है और उसको आगे ले जाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब इन सब मुद्दों को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, उसमें छोटी तकनीकी दिक्कतें होती रहती है और तकनीकी दिक्कतों के रूप से हम उसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन इतना प्योर एंड क्लियर बिल वेयर it has shown that we as a government, we want to give that freedom to think, freedom to innovate, freedom to go forward to youth of this nation through IIM. So मुझे लगता है इस बिल का सिर्फ और सिर्फ स्वागत करना चाहिए। ये एक शुरुआत है for this golden era where higher education is being questioned so many times, but where the answer to higher